जी सर, आ तो रही है लेकिन काफ़ी कम आ रही है। सबको कम आ रही है सर, मुझे भी कम आ रही है बहुत सर ज्यादा। ये सबको कम आ रही है। व्हाइट नॉइस बहुत हो रहा है, नॉइस बहुत हो रहा है अंदर। आप बताएं, अब आ रही है? बहुत फेंट आ रही है। इसका मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं दोबारा ज्वाइन इन करता हूँ तो देखते हैं। ठीक है। आप बताइए, आप कैसे आ रही है आवाज? सर अभी भी फेंट आ रही है। सर बीच में से कट जाती है आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में से कट जाती है। तो आप मेरा इंतजार करें, मैं 5 मिनट बाद दोबारा कोशिश करता हूँ ऑनलाइन आने की। नहीं अब सर वॉइस सही हो गई। अब ठीक होगी। सर आवाज सही आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा चलें, ठीक है। तो स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो सर। अब आ गई सर। अच्छा आ गई नहीं है? सर, आ जी रही है। सर आ गई। अच्छा, तो we start in the name of Almighty. I welcome you all to this new stream, AI in EE. So I can understand that this is something new for you and it's a transition, this DL mode teaching. Also, some of you are having issues with their admission process. So today we will have an overview of what we plan to do. So we will record every lecture. ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी LMS पे once you join in. तो अगर आप में से कोई क्लास अटेंड नहीं कर सका आज या बाद में, तो we have these video lectures. So there is nothing to worry. So we will go slow in the first week. I think so. Most of the class is online. Nobody is in the class right now. So, anyways, let's get started. So, we have been working for this new stream in EE for the last couple of years, and we were trying to convince our management that this is something which is very important. The general trend is that if you want to understand these things, you go for a CS degree. But we feel that if you understand the physical systems like electrical system or communication system, you are in a better position to make it intelligent. So we initiated this effort, and last year we managed to convince our management that we need the AI stream in addition to all the other streams which are there. So these are some of the things we use to convince our colleagues. यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी एक पेटेंट्स की अमाउंट ऑफ पेटेंट्स इन एआई एंड यू, और आपको पब्लिकेशंस नज़र आ रही हैं. तो राइट, मतलब till 2012 there were very few patents in AI, but now there is a boom. So the industry is moving towards adding intelligence to their processes.
The research world is obviously leading industry. They publish papers, and you could see a lot of papers in AI. But even with the scientific papers, you can see they are like exploding now. So now I think so. This was something written by some manager in IBM research, and he was sharing his thoughts that he was a double E engineer, and over the course of years, he was supposed to transform into an AI researcher. So the industry was changing, and so all the experts in the industry, they had to transform. So now you cannot look the other way. You cannot say that this is some software engineer or a computer scientist. You are expected to have some skills even if you are a double E engineer. It's a very good article. You can have a look at it. So now the good news is that there are very few double E around the world that are energetic enough and creative enough to adapt this transformation. So we tried to find out some of these departments. See कुछ आपको नजर आ रहे हैं जो they are double E departments, but they have these streams. So there is this Arizona State University. Then we have this Columbia University. We have double E department. And then Purdue University, we have AI for autonomous systems. These are very high ranked universities. So the students of MSEE AI are the lucky double E students. Very few students in the world who will be going through this coursework, AI for double E. So this places you in a very unique position. So again, there are these few universities which have something similar. So in this semester, you will be having these courses of mobile robotics and machine learning, stochastic systems, and convex optimization. Out of these four, these two are your core courses which you have to take anyway. The rest of the courses are electives, which you can choose. You can choose any course from the elective, but you cannot drop these two courses. I had to share one more thing with you, which I cannot find right now. So recently, the electrical engineering department in MIT, they decided that they need to merge or they need to come up with a new structure. ये आप देखें ये this news is from December 5, 2019. So one semester ago. So there they are they are combining this EE and CS and AI labs into one department. So the innovative EE departments around the world, they are going through this transformation. There are few other departments who are still rigid, so they will be left behind. But the good news for you is that you are in a very good company. So this is how the existence of your stream came into being. So now I want to discuss
what we will be covering in this course. But I am worried that most of your class fellows, they haven't logged in. So today I will not try to cover too many details. So hopefully tomorrow these login issues will be resolved and we will start our exciting journey of understanding the basics. So this course is about basic machine learning. We do not assume that you have taken a machine learning course before, and we do not expect you to be expert programmers. So we will start from the basics. So this course will cover the basics of machine learning. Next semester you will have a course which will cover the advanced machine learning, deep learning aspect. So if some of you have already taken an online course related to machine learning, for them this course is still beneficial. We will discuss all the choices in detail, and you can be part of that discussion, and you can ask some questions which I will try to clarify, or we will discuss amongst the class. So we will try to lay a strong foundation. Also, what we will try to do is that we will start with basic programming tutorials, MATLAB and Python. And those of you who haven't programmed recently, or they think they are not comfortable with programming, these tutorials are designed to help them. So all the assignments and the projects in this course will be programming based. The assignments will be simple, but I will advise you to do it yourself. This will give you the confidence for the advanced stuff that is coming in other courses or the next semester. And the evaluation of all these assessments, we do using Viva. So submission has no marks. I will ask you to see, did you do it? So if you have done it yourself, it will be easy for you. So we just want to lay a very strong foundation. The theme, the emphasis of this stream is that within 1 year, you have good hands-on skills. You can build simple programs easily, and this you will acquire through practice. So this is the first half. So this is my brief introduction. Most of my education was in this city. Then I did my master's from Germany, and then I moved to Spain for my PhD in 2016. Then for a brief while I was in US as a research visitor. Then I joined NAST in 2016, and from 2016 to 2020 we are in the process of developing a robotics and AI lab. So we have established this lab. You will find it. We have lots of robots over there which you will be using in the coming future. So for the last 4 years, we have been designing these advanced courses, AI and machine learning and robotics and vision. So last year, we managed to start the entire degree program with it. This is the brief history. Okay, so today we don't have a lot of time, so I will
So tomorrow when you come and all the login issues are resolved, there are a few things we have to discuss. We will see the new technology that is coming our way, the new world that we will be living in just a few years' time. We will see why do we need to understand those technologies. We will see the opportunities, job opportunities, and startup opportunities which are coming our way. And that is the main goal behind your master's education. You guys are already engineers. आप यहाँ पे एक MS की डिग्री शायद लेने आए हुए हैं आप में से कुछ लोग, बट काफ़ी सारे लोग जो हैं they have few questions in their mind. They want to excel in life. So the question that arises in their mind is that how would one more degree help them? So we will see what amazing things we can achieve if we start practicing and gaining experience on these tools. You will see that these tools are simple. You just need to practice them, and then you will be ready for the new world. You can develop something new if you really work hard and manage to do good research. I will show tomorrow how you can get into MIT through the back door. So these are the questions I will answer tomorrow. Today, I can briefly show you a simple toy example, which is about the question, how is machine learning different to simple programming? Okay. So, can you see my screen? आपको कुछ नजर आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ये एक वेबसाइट है, इसमें you can build small machine learning systems. So let me just show you a simple system, and that will help us understand how machine learning is different to programming. So you see, the world is creating these tools for small kids to understand how AI works. So here we will see a simple system similar to Alexa. Alexa देखी हुई है आपने, वो सुना है Alexa के बारे में? Yes, sir. जी सर, सुना हुआ है। क्या करते हैं Alexa, क्या करता है? सर आपके कमांड के ऊपर आप कमांड देते हैं तो वो आगे उसको प्रोसीड करते हैं, वॉइस कमांड देते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, वॉइस असिस्टेंट है हमारा, कुछ चीजें कर देता है, लाइट ऑन कर दो, लाइट बंद कर दो, फ्रिज वो टीवी ऑन कर दो। तो ये जो है ना एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे आपको बता सकूं ना तो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। आई विल इशू अ कमांड and then there are 4 if conditions. If you go into if condition, it checks whether I'm saying turn on the fan, whether I'm saying turn off the fan, turn on the lamp or turn off the lamp. तो 4 जो है ना कमांड्स हैं। पंखा हमने चलाना है या हमने लाइट जलानी है, ठीक है। तो अभी दोनों चीजें बंद है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, turn on the fan, पंखा। Can you see the fan working? Yes, sir. नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा चले, मैं अब जो है ना लाइट भी ऑन करने लगा हूँ। ये मैं लिखता हूँ टर्न ऑन द लैम्प। दोनों चल पड़ी चीजें, बात है सर। ठीक है।
नजर आ रहा है सबको लैंप जलते हुए? Yes, सर sir. बिल्कुल नजर आ सर। रहा है। अब ये देखें कि मैं ये लैंप या फैन में से ना कोई चीज बंद करना चाहता हूँ, तो व्हाट शुड आई टाइप? Turn off the fan. Turn off the स्विच fan. ऑफ द Turn off the फैन। lamp. टर्न, क्या ये, टर्न ऑफ दी लैंप। ये नजर आ रहा है आपको ये मैंने क्या लिखा हुआ है? नो सर। नहीं सर, मैंने ना छोटा है काफी। Sir, lamp की spelling. अच्छा. लैंप के स्पेलिंग गलत है, तो मैंने कमांड दिया और कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Sir, lamp की Spelling- spelling गलत थी. लैंप के स्पेलिंग गलत थे। वो स्ट्रिंग मैच नहीं की ना। हाँ नहीं की, तो चलें मैं कह देता हूँ टर्न, स्पेलिंग ठीक करूंगा, टर्न ऑफ लैंप। अब भी नहीं हुआ। Sir, अब क्या D नहीं है ना? क्या नहीं है? D नहीं है. दी नहीं है। तो यू सी, ये जो हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम्स हैं, इसमें दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। अगर मैं एक लफ्ज गलत बोल देता हूँ या एक गलत एक बीच में से जो वर्ड है वो बोलता ही नहीं हूँ, तो इट डजंट वर्क। ठीक है, बट आई कैन मेक इट वर्क। मैं चाहता हूँ कि मैं द ना भी बोलूँ ना, तो भी लैंप जो है ना वो बंद हो जाए। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए सर दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो आप जितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं और कमांड में लगा के आगे लगाते जाएं, अगर ये भी हो ये भी हो ये भी हो। या फिर हम इसे मशीन लर्निंग के साथ कर सकते हैं, डाटा को अपने को ट्रेन करके, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो उसके करीब तरीन हो गया वो हाँ। गेस कर लेगा। चलिए अभी मैं इसको रोकता हूँ ना, तो जो आप बता रहे हैं मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ये जो इफ वाली चीज है ना, इसको मैं एक और इफ डाल देता हूँ इधर बीच में ना, तो एक और इफ आ गया और अब मैं निकाल देता हूँ, दा निकाल देता हूँ इसमें से ना। पहले अब दोबारा इसको रन करते हैं। पहले टर्न ऑन कर लेते हैं, टर्न ऑन द लैम्प। लैम्प ऑन हो गया, पंखा भी चला लेते हैं, टर्न ऑन दी फैन, फैन भी चला लेते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा तो लैम्प बंद हो जाएगा? टर्न ऑफ लैम्प। टर्न ऑफ, दा भी लिखूं या ना भी लिखूं, तब भी दोनों तरीकों से बंद होना चाहिए। दोनों तरीकों से हो जाएगा। टर्न ऑफ लैम्प कर दिया, बंद हो गया। ठीक है, तो अब ये देखें ना, ये जो प्रोग्रामिंग इन इटसेल्फ इज नॉट इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको फंक्शन करवाना है ना, इस तरह के किसी भी स्मार्ट डिवाइस को, इसको इंटेलिजेंट बनाना है, तो फिर मुझे हर किस्म की जो स्ट्रिंग है, हर किस्म की गलती जो मैं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी कि ट्रेडिशनल इफ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो दिस इज नॉट इंटेलिजेंट, दिस इज जस्ट ब्रूट फोर्स। मैं बस यहाँ लिखता जा रहा हूँ। अब मैं चाहता ये हूँ, हम चाहते क्या है मशीन लर्निंग से? हम मशीन लर्निंग से चाहते ये हैं कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं ना, अगर मैं एग्जैक्टली उन जैसी चीज़ें नहीं बोलता, और मतलब उस जैसा कुछ बोलता हूँ, एग्जैक्टली वो नहीं बोलता, तो भी काम करे। मतलब मैं अगर ये कह दूं कि टर्न ऑन द लैम्प प्लीज फॉर एग्जांपल, तो अगर एक ह्यूमन सुन रहा होगा तो व्हाट वुड ही डू? ही नोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्विचिंग ऑन द लाइट। तो दिस इज आवर गोल कि हमें ये सारी जो कंडीशंस हैं वो लिखनी भी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो पूरा कोर्स है ना, इसमें हमने ये देखना है कि ये सिस्टम हमने कैसे बनाना है। ये तो यहाँ पे मैं आपको ना इसका मशीन लर्निंग वर्जन दिखा देता हूँ। इसको रोकते हैं, आई गो बैक। तो पहले जो है ना, हमें मशीन लर्निंग में ना ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पहले सिखाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ना
4 डब्बे बनाए हुए हैं। हर डब्बे में ना मैंने कोई 4-5 जुमले लिख दिए हैं। तो आप पढ़ सकते हैं कि फैन ऑन करने के लिए मैंने क्या क्या बोला है। टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। टर्न ऑन द फैन ऑन कर दो, पंखा ऑन कर दो, इस तरह की चीजें। बहुत गर्मी है। ठीक है, मतलब if you enter a room and you say बहुत गर्मी है, तो मतलब what do you want the person to do? फैन ऑन द फैन। To switch on the fan. हाँ, मतलब तो ये मतलब these are only 4-5 एग्जांपल्स जो है ना मुझे जो मेरे ज़हन में आई। आप और भी बता सकते हैं, आप बताएं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप कोई बताएं, मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत गर्मी है यार। वो तो लिखा हुआ है ना पहले ही। बहुत गर्मी है जी। पंखा तेज चला दे। पसीना आ रहा है। कर देते हैं, पंखा तेज चला दें। चलिए ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स इकट्ठी कर ली। अब Yes. जो हमारे ज़हन में पहला सवाल आता है ना कि आर दीज इनफ? No sir. तो वी डोंट नो, मे बी दे आर, मे बी दे डोंट। तो मशीन लर्निंग सिस्टम में ना जब हम सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये एक साइकिल होती है। हम कुछ एग्जाम्पलें इकट्ठी करेंगे, फिर हम जाके ना एक सिस्टम ट्रेन करेंगे। वो अब जैसे भी होता है, ये मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब इसके पीछे कोई एल्गोरिदम है जो कि हम सीखेंगे इस कोर्स में। दिस विल टेक कपल ऑफ मिनट्स, वो ट्रेनिंग हो रही है। तो हमने एग्जांपल्स इकट्ठी की, अब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, व्हाटएवर दैट इज। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब ट्रेन सिस्टम हो जाएगा ना तो हाउ डज इट फंक्शन। अगर तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है तो वेरी गुड। तो असल कहानी शुरू होती है जब आप सिस्टम डिजाइन करेंगे तो वो काम नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। तो वहां से जो है ना आपका रोल स्टार्ट हो जाता है एज अ डेटा साइंटिस्ट। आपने ये पता चलाना है कि इस सिस्टम में क्या गड़बड़ है, क्या तकलीफ है इस सिस्टम को। तो हम देखेंगे कि without being expert in different domains, for example you are dealing with medical data, you are not a doctor, you don't understand। यहाँ पे तो जो मैंने कमांड्स लिखी थी वो आपकी समझ में आ गई थी ना सबके? यस सर। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जो अगर मेडिकल डेटा है तो मेरी समझ में तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस ECG डेटा व्हाटएवर। तो I want to design a machine learning system to which should function in a way that doctor will function। ठीक है, कि उसने रिपोर्ट देख ली and I want to ask this AI doctor to tell me is it good or bad। तो if we are to design such systems, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग तो आती है और मुझे मशीन लर्निंग भी आती है, लेकिन मुझे मेडिकल डोमेन का नहीं पता। तो कैन आई डिजाइन अ सिस्टम? दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Yes sir. ठीक है, तो what we will see in this course is all those tricks that we will use to figure out what is the problem with the system even without being the domain expert। ये लेवल 1 है हमारा, यानी कि हम करना चाहते हैं। अब ये हमारा सिस्टम ट्रेन हो गया है ना, तो लेट्स गो बैक एंड सी कि क्या हमने जुमले डाले हुए थे ट्रेनिंग में। चलिए, अब मैं जो है ना इनमें से एग्जैक्ट लफ्ज नहीं यूज करता, मैं कोई और लफ्ज यूज कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तेज चलाओ, Then I write तेज चलाओ, तो आप what do you understand? फैन ऑन करें। क्या करें? फैन फैन ऑन ऑन। मतलब अब इन दो चीजों में तो लाइट तो तेज नहीं ना मैं चला सकता, जी जी। पंखा ही तेज चलाना होगा। दिस इज
what my sense tells me. अब हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम जो है ये क्या करता है, मतलब ये चीज इसने पहले देखी नहीं थी, एग्जैक्टली ये चीज इसने नहीं देखी हुई थी। जी बिल्कुल। लेट्स सी क्या कह रहा है ये। तेज चलाओ। रिकॉग्नाइज फैन एज अ फैन ऑन। यस सर। तो ये काफी कॉन्फिडेंट है, 40% ये कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपने पंखा चलाने की बात की है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये चीज इसने देखी नहीं हुई थी। इस जैसी, अच्छा कुछ और जाकर देखते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा ये देखें जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स डार्क इन हियर। अब मैं जाके लिखता हूँ डार्क। डार्क भी लिखने, मैं लिख देता हूँ इट्स हॉट इन हियर। क्या होगा? फैन विल ऑन। लाइट। क्या कह रहा है ये? लैंप। ठीक है, तो कोई चार तो काफी कॉन्फिडेंट है। एक्सपर्ट नहीं बन जाएगा लैंग्वेज का सिस्टम। आप ये देखें, हॉट का लफ्ज तो शायद कहीं पे भी नहीं यूज हुआ था। ये जो इन हेयर वाला लफ्ज है ना, ये आपने यूज किया था लैंप ऑन में। यस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिस्टम परफेक्ट हो जाए। तो एग्जैक्टली। हमारा एम जो है ना इस पूरे कोर्स में, ये आपके सामने मैंने एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सिस्टम डिजाइन भी कर दिया, हमने रन भी कर दिया। It's a complete system which is ready. You can add more examples over here and you can make a better system. But what we need to do while designing systems is that we need to find out, are these systems good enough? और अगर इनकी कोई वीकनेस है तो हमें बताए आकर, ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। तो now let me go back and change this system to a machine learning system. Let's see. तो ये जो पूरा आपने इस कोर्स में सीखना है ना, वो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। हम कोई प्रॉब्लम लेंगे, हम एग्जांपल्स इकट्ठी करेंगे, हम किसी तरह से सिस्टम ट्रेन करेंगे और फिर सिस्टम ट्रेन करने के बाद पता चलाएंगे कि इज इट गुड इनफ और नॉट। तो ये जो जब आप सिस्टम डिजाइन करेंगे, आप नॉट गिविंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट ऑलवेज, एंड देन इट्स योर जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट टू फिक्स इट। अच्छा लेट मी सी, यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ। अब मेरे पास ना कुछ नए डब्बे आ गए हैं। So what you will see is that in designing these AI systems, you don't have to code a lot. You know, already systems you can use the functions. ठीक है ना, ये आपको मिल जाएंगे। ये भी आपके सामने हम पूरा एक एलेक्सा डिजाइन कर रहे हैं। तो even a kid can do it, so can you and so can I. मैं भी कर सकता हूँ ये। एक मिनट और मुझे मिल जाए ना।
So you don't have to worry about कि ये मैं क्या programming language use कर रहा हूँ, ये it's just a tool to play with things. We will be actually using the programming language. चलिए अब तैयार हो गया हमारा सारा कुछ. Yeah. एक चीज रह गई. अब हम जो चीज बोलते हैं ना, तो हम इस काले डब्बे में से पास करते हैं. हम अपने सिस्टम को कहते हैं कि आप बताएं कि ये कमांड किससे ज़्यादा रिलेटेड है. फैन ऑन से रिलेटेड है, फैन ऑफ से रिलेटेड है, लैंप ऑन से रिलेटेड है कि लैंप ऑफ से रिलेटेड है. ठीक है, तो लेट्स रन इट. और अब हम लिखते हैं गर्मी बहुत है. तो है अच्छा, चल पड़ा. अंधेरा 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 पे कुछ नहीं हुआ. मेरा ख्याल है वो हमने एग्जांपल्स में नहीं डाला था अंधेरा. अंधेरा भी है. क्या हुआ, सिस्टम हमारा हैंग हो गया. एनीवेज, तो I will try to search. There was a very funny video about Alexa. Oh, Irish kid. So this is Alexa is being developed by advanced companies. But if I can show you this video. क्या पता नहीं क्या वेबसाइट है ये, मुझे समझ नहीं आ रही. सर ये वीडियो हमें नजर नहीं आ रही. अच्छा नहीं नजर आ रही. जी नहीं, चलिए सर मैं ये आपको लिंक भेज दूंगा. इट्स अ वेरी फनी वीडियो. में एक छोटी बच्ची है और जो एलेक्सा है उसका एक्सेंट समझ नहीं पा रही ना, तो शी इज फाइटिंग विद दैट डिवाइस. okay. So we have designed a system that can understand English and part of Urdu as well. So we have already designed a system which is better than the Alexa. I think. So this is a good start. Hopefully we will design much more sophisticated things. So Inshallah. Inshallah. So let's meet again tomorrow at 6 o'clock, and then we will move from there. So today what we have covered is that machine learning is not programming and machine learning is not difficult. We just need, as a data scientist, हमारा रोल ये है कि हमने जब सिस्टम सही काम नहीं ना कर रहा होता, तो जिस तरह आप गाड़ी लेके जाते हैं ना उस्ताद के पास, तो लोग अपना मसले लेकर आएंगे आपके पास कि जी कोई इसका इलाज करे. This is what we have to learn. So for those who have not taken any AI machine learning course, you should practice. So within this semester you will come up to speed with the rest of the students. For the other students who might have taken any course, we will have a project in this course so they can flex their muscles in designing an advanced project. I will also advise
people with experience to start joining labs, जिसकी मैं कल बताऊंगा कि क्यों you should start working on some research problem already. तो कल हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे how to get into MIT. ओके, थैंक Yes, यू। sir. Thank you, सर sir. एक कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर दें। कल हमारा ये जो है ऑन कैंपस ही होगी ना क्लास? जी एक दिन डे